Today, the last chapter that we're going to do in series of thermal physics is transfer of thermal energy. Okay? There are three modes of transfer of thermal energy. Again, we have to see whether we're going for liquids, solid, liquid, or gas. When it comes to solid, the way we can transfer energy in solids, the thermal energy in solid, is conduction. And for liquid and gases, we use convection or radiation. आज हम convection and conduction के बारे में पढ़ेंगे. What are these modes of transfer of energy and how they transfer energy in solids. Then you'll go back and revise step number 9 and 10 and make sure there is no issues with those particular topics. Clear? When it comes to conduction, conduction is defined as the mode of transfer of thermal energy in which energy is transferred from particles to particles. ठीक हो गया? अब सॉलिड्स में हम कंडक्शन के मोड को क्यों डिस्कस करते हैं सॉरी. व्हेन इट कम्स टू सॉलिड, लेट्स कंसीडर हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है. उसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स हैं एंड ऑल दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. अब व्हेन इट कम्स टू सॉलिड, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है. वन इज कंडक्टर एंड द अदर वन इज insulator. Conductor conducts because of free electrons. ठीक है. That is कि when it comes to conductors, we will have free electron as a bonus particles जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे across the medium. अब मैं अगर सिर्फ एक ऐसे डॉट ले लेता हूं और जिसके अंदर हमारे पास एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. Are you saying something? Okay. So when I'll give energy to this particle, it will move up and down and will transfer energy to this particle. This particle will energy transfer to this one, and this would so go on so on. So this mode of transfer of energy in which the two particle energy is transferred is known as conduction. But when it comes to conductors, we have free electrons which would at the same time would transfer the energy faster. ठीक है? So free electrons or mobile electrons transfer the energy faster. अब ऑब्वियस सी बात है कि एक जब आप पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करोगे, when the energy is being transferred from one particle to the other, it would take time. On the contrary, when the electron from the position would move itself to the other point to exchange its energy. That's why metals get heated faster as compared to wood or any insulator. ठीक है? Because metal में particle to particle तो energy transfer हो रही होती है, but at the same time the free electrons would transfer the energy faster as compared to. So conduction is the mode of transfer of energy in which the energy is transferred from one particle to the other. Let me take you to the book where this topic is discussed, and
I would show you more from this. Conduction mostly occurs in solids, as I explained it to you. We have two types of materials, conductors and insulators. Mostly wooden materials are insulators, and metal objects are conductors. Conductors are called conductors because they have free electrons. Keep this in your mind. And insulators do not have free electrons. Otherwise, they have the same structure, apart from having free electrons. Okay. And this is the experiment that we normally discuss to show which is a better conductor. We take multiple rods, and with each rods we attach paper clips along with side of wax, and we give heat to all the rods at the same time from the same distance. The rod through which the paper clip will fall the first would be the best conductor, and through which to which the paperclip falls the last would be the insulator. So if there comes a question in which he would ask, the examiner would ask that how would we justify which material is a better conductor, we would discuss this kind of an experiment alongside with the paper clips. Okay. And this is the experiment through which we explain why conduction is not right for liquids. As I explained to you at the beginning of the lectures, that convection is for liquids. In this experiment, they have shown that we have a test tube in which we have water. And here we have water and we have ice. Okay. अब ये जो आइस है हमारे पास, हमने वाटर को यहाँ से हीट अप करना स्टार्ट किया. The water at this point started boiling and ice have not melted yet, which means the transfer of thermal energy through water through conduction is not right. Because अगर conduction का phenomena through water हो रहा होता, तो पहले all of the ice must have melted and then the water have started boiling. But that is not happened, as the water at the beginning started to boil. At the top, sorry, started to boil, and the ice at the bottom is still present. This shows that conduction is not the right phenomena for liquids. Clear? Here the phenomena of conduction is explained. Sorry, let me take you back. उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है? उस टेस्ट ट्यूब के अंदर they added water and ice. और उन्होंने वाटर को उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से हीट अप करना स्टार्ट कर दिया. कहां से हीट अप करना स्टार्ट किया? फ्रॉम द टॉप, ऊपर से. ठीक है. जब उन्होंने यहां से उसको हीट अप करना स्टार्ट किया एट दिस पॉइंट, तो the water at this point started boiling, whereas the ice have not melted yet, which means कि अगर water में conduction का phenomena हो रहा होता, तो पहले तो सारी heat transfer होनी थी ice को, ice ने melt होना था, and then water should have started boiling. But अगर water at the top started boiling and ice अभी melt नहीं हुई, which means particle to particle energy transfer in liquid is not possible. And why it's not possible? Because we know the structure of liquids. Liquids के particles further away होते हैं, तो conduction का phenomena is not right for that. So if someone would ask us that give an experiment through which we can justify that conduction is not feasible for liquids, we will explain this experiment. We will take a test tube, we'll put an ice at the bottom of it, and we'll start boiling, start heating the water from the top. The water at the top would start boiling and the ice has not melted yet, which shows that conduction is not happening in liquids, and which means particle to particle energy transfer is not efficient in liquids. Do you get it now? In order to check which is a good insulator, they have given us this experiment as well, that we would use, we would take 3 beakers, बल्कि 4 beakers, one with no insulation, one with fur, one with bubble wrap, and one with cardboard. All have the equal diameters, lid at the top and thermometer, and all have given the same amount of water and the water at the same temperature. Okay? And then they have noticed the rise of temperature in the thermometer. The one
which has the biggest rise of temperature in it, which means कि वो सबसे best insulator है. For example, अगर cardboard का temperature 90 डिग्री C है, on the contrary इसका temperature हमारे पास 80 है, इसका हमारे पास 95 है, and इसका हमारे पास 70 है at most. ठीक है? So which would be the best insulator? Which media would be the best insulator? Which one do कार्डबोर्ड you think is the best? हाँ? कार्डबोर्ड वाला है, कार्डबोर्ड या फर में से कोई एक है. Fur has a temperature of 95 degrees Celsius, which means कि वो water को heat up रखने में सबसे ज़्यादा successful हो. So if there comes a question जहाँ पे they ask us about this कि which is the best insulator, तो हम ये experiment वहाँ पे discuss कर सकते हैं. ठीक है? हाँ जी. Then comes the second mode of transfer of energy, which is convection. Okay. When it comes to convection, we would discuss it in terms of the mode of transfer of energy. Convection, the mode of transfer of thermal energy in which the particle itself move from its position and exchange its energy. अब हमने वो टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट तो कर लिया. टेस्ट ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हम कब डिस्कस करेंगे? जब हमें ये शो करना होगा कि कंडक्शन इज नॉट द राइट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. व्हेन इट कम्स टू कन्वेक्शन के अंदर हम लोगों को वी नीड टू नो द टर्म कन्वेक्शन करंट. ओके, convection current is defined as it's the movement of hot and cold particles being further apart becomes less dense. Cold particles having least kinetic energy become more dense. किस फॉर्मूला की बेसिस पे? पर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर कि डेंसिटी एंड वॉल्यूम हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप. सो जब हम लोगों ने प्रीवियस पार्टिकल में एक्सपेंशन पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर that when a particle is heated they expand, they go further apart. So when they would go further apart their volume would increase, and when the volume would increase their density would decrease. They would go up. ठीक है? Moving upward. Whereas जो cold particles होंगे having least kinetic energy being more dense moves down. Are we clear about less dense and more dense particles and their movement? Less dense move upwards and Sorry? हाँ जी. लेस डेंस जो होगा वो क्यों होगा? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, एंड ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी दे आर फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर.
because their volume would increase, they would expand, and due to that expansion, they would become less dense and they would move up. Okay, which means hot particle leads to greater kinetic energy, leads to expansion, leads to more volume, leads to less dense, leads to being lighter, which leads to moving upward. ठीक हो गया? अब इसको justify करने के लिए there's an experiment that is discussed in our book that they have a system like this. They have two chimneys, chimney one, sorry मैं यहाँ लिखता हूँ chimney one and chimney two. At the top of one chimney, there is some sort of smoke bomb or visible smoke, source of visible smoke. And there they have put a candle. ठीक है, अब ऑब्वियसली जो यहाँ का सरफेस एरिया होगा at this point, let me use a pen. Okay, मैं annotation on कर लेता हूँ. With the pen that would be removed. Management. Okay. अच्छा, अब यहाँ से स्मोक क्या करेगा? इन करेगा द विजिबल स्मोक. एंड व्हाई इज दैट? उसको एक्सप्लेन करते हैं. अब यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होगी, ड्यू टू दिस स्मोक इट वुड हीट अप और वो यहाँ से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी. अब ये एरिया क्या हो गया? एम्प्टी. इस एरिया को फिलअप करने के लिए यहाँ से कोल्ड पार्टिकल्स जो है वो इन होंगे. जब कोल्ड पार्टिकल यहाँ से इन होंगे वो हीट अप होंगे. अब वो कोल्ड पार्टिकल्स बेसिकली क्या है यहाँ से जो इन हो रहे हैं? वो ये विजिबल स्मोक है. ठीक है, when that visible smoke will enter, taking the place of this empty space. So we would see that smoke is entering from here and exiting from here, which means hot particles becomes less dense and go upward, and taking their place is cold particle which would move inward. ठीक है? Do you get the point? Okay, we would see the visible smoke coming from here being more dense, going downward, and taking their place hot air being less dense would move upwards. So the hot air would leave this area, hot air leave, and cold air take its place. This justifies the convection current. Convection current हमने क्या define किया था? It is the movement of hot and cold air particles. And hot particles being less dense move upward and taking its place is the cold particle. Do you get this point, better? Let me take you to the book now.
This is the experiment I was talking to you about. They have put a burning paper above one chimney to create a visible smoke, and underneath one of the chimney they have put the candle. Up the air present here, all of the air present here would get heated due to this candle and would move upward. Taking its place, cold particle would come in. So the cold air particle in आएंगे, the smoke would also come in along the way. ठीक है? एंड तब फिर हमें विजिबल स्मोक यहाँ से इन होता हुआ नजर आएगा, यहाँ से एग्जिट होता हुआ दिखाएगा. दैट वुड शो द कन्वेक्शन करंट. दिस experiment of potassium permanganate crystal is used to justify that convection is actually what is occurring in liquids. Convection ने क्या define किया था? Movement of particles from one place to another and exchange their energy. होता क्या है कि जब हम potassium permanganate crystals को, when we put the potassium permanganate crystal at the bottom of the beaker here and we start heating it from there, तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं? जब हम उसको हीट अप करते हैं, we would see like stream of colors going upward like this. This shows that the particle here would go up and would exchange its energy, or itself would move from this position and would go upward and exchange its energy. So this stream of colors going up shows that in liquids, particle itself, in liquids or gases or fluids, whatever we are discussing about, in this particular substance, the particle itself move from its position and exchange its energy to the neighboring particle. So if there comes a question where we have to justify that, how can you say in convection the particle is itself moving from its position and exchanging its energy, तो हम ये potassium permanganate crystals की example देंगे. अगर वो हमसे कहें कि how would you justify convection current is there, तो हम ये चिमनी वाली example देंगे वहां पे. And if they ask why conduction is not good for liquids, तो वो हम test tube वाली example देंगे. ठीक है? And to show which, yes, let me write all these down for you in your notes so that you could reach out to these notes whenever needed. So discuss the following experiments if asked about which is the better conductor. ठीक है? For that, we would use this experiment. These two. And when it comes to why conductors are better thermal conductors, तो उसके लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे? We would go for this experiment. Okay, when it comes to conductor, we have free electrons alongside with the this. And let me do this as well to your part. Okay, ये आ गया इसमें हमारे पास. ठीक हो गया. एंड देन हमारे पास है कि why conduction is not feasible for liquids. तो हम उसके लिए वो टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक हो गया. अब ये सारे पॉइंट्स आप लोग ने उसमें रखने हैं
you must remember the theory alongside with it, so that if you have any issues with the vocabulary, then you can just go ahead and do this. This is the experiment which you will use to justify the wire conductance. ठीक हो गया. And अगर which one is the best insulator? Which one is best insulator? उसके लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था इसके अंदर. हम इसमें रेस कर देते हैं ये सारा. वीडियो तो जाए ताकि नहीं साथ है. फातिमा मस्ट रिमेम्बर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स. और अगर थ्योरी के अंदर इनके अंदर कोई मिस्टेक हुआ, आई वुड नॉट बी हैप्पी विद यू एट ऑल if you'll do any mistake with respect to these questions. Just keep this in your mind. Then हमारे पास कौन सा एक्सपेरिमेंट आता है कि कन्वेक्शन क्या होता है हमारे पास. ठीक है, कन्वेक्शन में हम लोग ये सब करेंगे कि द मूवमेंट ऑफ we would use this experiment to justify that convection is basically the movement of मेरी particle. screen black Sorry, और मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी थोड़ी देर के लिए. इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रहा होगा. This experiment justify convection is the movement of particle itself from this. ठीक हो गया. एंड लास्ट में हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि वो चिमनी वाला, कि दिस चिमनी एक्सपेरिमेंट वुड help us to understand the meaning of convection current. So अगर इन्होंने हमसे convection current मांगा होगा, हम how would you justify कि convection current होता है, कि movement of particle होती है, हम लोग we would go with this experiment. Okay? हाँ जी. This experiment justify that convection current is. That's it for today. I hope you understand everything. If there's any question, you can go ahead and ask. Last mode of transfer of energy when it comes to thermal processes is radiation. It is defined as, it is the transfer of thermal energy in the form of electromagnetic waves, mostly in the form of infrared radiation.
याद है मैंने क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टर्म आपको कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के टर्म्स ऑफ बहुत सारी फॉर्मेशंस में पढ़ोगे हाँ जी। without the presence of any medium. जैसे कंडक्शन एंड कन्वेक्शन जो थे मीडियम डिपेंडेंट थे, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन जो थे ये मीडियम डिपेंडेंट थे। ये सॉलिड्स में होता है, ये एयर यानी गैस एंड लिक्विड दोनों में होता है, पॉसिबल है दोनों में। तो जो थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मेशन आती है, मतलब थर्ड टाइप ऑफ थर्मल प्रोसेस आता है, दैट इज रेडिएशन, वो मीडियम इंडिपेंडेंट। जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात आएंगी वो मोस्टली मीडियम इंडिपेंडेंट ही होती है। अब इन रेडिएशंस का, इन ये जो आईआर रेडिएशंस हैं जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मोस्टली हीट वेव्स होती है हमारे पास, ठीक है। जो इंफ्रा रेड रेडिएशंस होती हैं, दे आर नॉर्मली हीट वेव्स। ठीक हो गया? विच मीन्स ग्रेटर द टेम्परेचर, this would mean greater the temperature, shorter would be their wavelength, more thermal temperature, more thermal energy. ठीक है। अब इट मींस आपने नाइट वीएन उनका कैमरास वगैरह के बारे में सुना होगा, या आईआर कैमरास जो होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन कैमरास जो होते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो हमारी बॉडी पे जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करती हैं। ठीक हो गया? जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होंगी, जितना लेस टेम्परेचर होगा बॉडी का उतनी ही लेस इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एमिट होंगी। बट आईआर रेडिएशन आर ऑलवेज प्रेजेंट। हाँ, अगर आप 0 डिग्री सी पे और या वेरी कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर जाओगे तब ये प्रेजेंट नहीं होंगी। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर या बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ये जो वेव्स हैं ये एग्जिस्ट कर रही होती है। व्हेन इट कम्स टू थर्मल रेडिएशंस, यहाँ पे हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज कलर। ठीक है। हमारे पास जो ब्लैक सर्फेसेस होती हैं एंड मेनली डल ब्लैक सर्फेसेस जो होती हैं, ये गुड एमिटर एंड एब्जॉर्बर होती हैं, वेरास जो शाइनी सर्फेसेस होती हैं दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स, which means these kind of bodies are used to keep an object cold or hot, क्योंकि वंस इसके अंदर कोई भी चीज आप इनपुट करेंगे तो जो वो चीज ठंडी या गर्म ही रहेगी, ठीक है, इट विल रिमेन हॉट एंड कोल्ड। वेयरएज ब्लैक सर्फेसेस जितनी जल्दी एमिट करती हैं उतनी जल्दी एब्जॉर्ब भी करती हैं, विच मीन्स कि अगर हम एक बॉक्स लें and we color that box with different paints, ठीक है, एक साइड को हम कर देते हैं ब्लैक
वन साइड जो है हम इसमें ब्लैक कर देते हैं, एक साइड हम लोग जो है वो वाइट कर देते हैं, मतलब वी रिमेन वी कीप इट वाइट। एक जो है हम शाइनी वाइट सरफेस कर देते हैं, ठीक है, और एक शाइनी ब्लैक सरफेस कर देते हैं, और बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है हम लोग एक कोई थर्मोमीटर वाटर का सोर्स पुट कर देते हैं। बल्कि लेट मी नॉट ड्रॉ दिस, हम लोग ऐसे करते हैं, हम दिस इज नॉट द राइट कलर। हम एक हीटर लेते हैं और इस साइड पे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एक ब्लैक सरफेस रख देते हैं, ब्लैक कार्ड रख देते हैं, और यहाँ पे शाइनी कार्ड रख देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग जो है आईआर डिटेक्टर्स लगा देते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स। एंड वी वुड ऑब्जर्व के ब्लैक, so would put the IR detectors on either side, and after some time we would notice कि जो black side है उसका temperature rise सबसे ज्यादा हुआ है as compared to the one जिसका sorry, I shouldn't be using this one. So जो हमने black side का जो detector होगा, it would have the greatest temperature rise and it would have the least temperature rise. That we would know that the as the heater was at equal distance from both the black card and the silver card, this means that black is a good absorber and जो shiny surface है, it's a good reflector. एक लेस्लीज क्यूब भी होती है, देयर इज अ टर्म यूज, टर्म नहीं सॉरी कह रहा हूँ, लेस्लीज क्यूब एक हमारे पास होता है, क्यूब होती है, वही जो मैं अभी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था ना, बट आई वाजंट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। उसके अंदर क्या होता है, इसकी चार साइड्स होती हैं, आई माइट हैव इट इन द बुक एज वेल, लेट मी ट्राई एंड फाइंड इट आउट फॉर यू। दिस इज द लेस्लीज क्यूब, ठीक है। इसकी इट हैज फोर सर्फेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड उसके सेंटर में बिल्कुल जो है वो हीटर प्लेस्ड होता है, एंड उन फिर आईआर डिटेक्टर्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे ऑन ईच फेस जो है रखा होता है, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। मुझे नजर नहीं आ रही। नाउ कैन यू सी नाउ? हाँ जी। तो कैन यू सी द रेड डॉट? हाँ जी। So, this was the drawing I tried to drew on the notes. But उसके अंदर यही होता है हमारे पास कि we have a heater, we have two cards attached to the thermometers, and when we turn on the heater, we would observe that the black surface has the highest temperature rise, and the silver surface or the white surface has the least temperature rise. This would जो है help us to understand that black is a good absorber and emitter, whereas the shiny surfaces होती हैं they are good reflectors of heat. ठीक हो गया? This was the Leslie's हाँ cube which जी। I was trying to explain it to you. अब infrared radiation radiation का phenomena क्या होता है? How do we define radiation phenomena? It is a mode of transfer of thermal energy in the form of electromagnetic waves. Okay? अच्छा, इधर एक लिखा हुआ है, रेडिएशन इज द ओनली फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर विच डज वो नॉट मीडियम इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट होती पार्टिकल्स। है। हाँ ये जी, लिख सकते हैं जो मीडियम, हाँ जो मीडियम इंडिपेंडेंट इसी होती है। क्वेश्चन के आंसर में जी बेटे लिख सकते जो हैं आपने हम। पूछा। बिकॉज मीडियम एक मिनट इंडिपेंडेंट रुके। होती है, जब मीडियम इंडिपेंडेंट है तो दैट मीन्स के उसको कोई पार्टिकल्स या कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है फॉर इट फॉर द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। अच्छा। ठीक है। सो व्हाइट सरफेस के बारे में आपको पता होना चाहिए
that white and shiny surfaces are good reflector. On the contrary, जो black surfaces होती हैं, they're good absorber and emitter. Then radiations of phenomena basically जो medium independent होता है, that is how the light reaches to us on Earth. ठीक है? अब in the space there is no medium present, but still the light reaches to us. This means के हम लोग जो radiation है, it is a medium independent phenomena. In order to transfer this energy, we do not require any kind of medium. Here's the definition as well. The process of energy transfer by electromagnetic wave, it does not require a medium. अब लाइट हमारे पास रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, these ये सारे phenomena हैं through which energy is transferred in the form of radiations. ठीक है? अब जो थर्मल रेडिएशंस होती है, it depends on the following factors. के सरफेस टेम्परेचर जो मैंने आपको पहले बताया था ना, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा आईआर रेडिएशंस एमिट होंगी, एंड सरफेस एरिया एंड कलर. ठीक है? कलर एंड टेम्परेचर को हमने डिस्कस कर लिया था, सरफेस एरिया का जो पार्ट था वो रह गया था. अब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास एक सरफेस एरिया ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा एमिट करेगा एज कम्पेयर टू द वन जिसकी टेम्परेचर जो है वो कम होगा. सॉरी, सरफेस एरिया कम होगा. जैसे सरफेस टेम्परेचर कम, सरफेस एरिया कम होगा, वो जल्दी हीट अप होगा, जल्दी कूल डाउन होगा. लेकिन जिसका सरफेस टेम्परेचर, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, तो इसका ज्यादा हमारे पास जो है फ्लैटर कर्व आ रहा है, इसमें मोड कर्व आ रहा है हमारे पास. तो दिस मींस फास्टर रेट ऑफ वो होती है. आप एक वन, इफ यू हीट अप वन ग्लास ऑफ वाटर एंड एट द सेम टाइम यू हीट अप वन बाउल ऑफ वाटर, which will take more time. बाउल. What glass of water टाइम लेगा कि बाउल ज्यादा टाइम लेगा? कैपेसिटी की बात कर रहे हैं या सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं? सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया. ऑब्वियसली जो बिगर सर. बाउल होगा इट विल टेक मोर टाइम. ठीक है? हाँ to heat जी. up as compared to one glass of water. अब this is what I was तो मैंने भी talking तो. to you about कि our bodies emit radiations. ठीक है? जितना ज्यादा हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा, आप देखो जैसे रेड रेड रीजन में जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है. जो लोअर कलर्स है उनका टेम्परेचर जो है वो वार्मर कलर्स, कहते हैं ना, वार्मर कलर्स पहने और लाइटर कलर्स पहने इन द समर्स, और हम लोग जो है डार्क शेड्स पहनते हैं इन विंटर्स, तो उसका कलर का इफेक्ट होता है हमारे पास. ठीक है? सो as we would observe through the IR detectors, अगर हमें रेड कलर ऑब्जर्व होता है या कैमरास में रेड कलर ऑब्जर्व होता है, इट मींस उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है. अगर हमें कोई और कलर ऑब्जर्व होगा, ब्लू या ग्रीन या इस तरह के शेड्स, दिस मींस उनका टेम्परेचर इज नॉर्मल एंड लेसर टेम्परेचर है, कोल्डर बॉडीज है हमारे पास. ठीक है? यहाँ इंफ्रारेड रेडिएशंस की डेफिनेशन मेरे बुक में लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद अ वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ द विजिबल लाइट. या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हम लोग आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे ये दोबारा आएगा. ठीक है? अब सी, इफ दे आर अपीयरिंग रेड, दिस मींस इनका टेम्परेचर ज्यादा है या कम है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग. ठीक है? द सराउंडिंग इज वॉयलेट एंड ब्लू, व्हिच मींस यहाँ पे टेम्परेचर कम है. एंड इफ दिस ऑरेंज रेड एरिया शोज के इट्स वो. अब नॉर्मली जो कार्स होती हैं उनके फ्रंट मिरर के ऊपर जो, इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट, विंडशील्ड, हाँ विंडशील्ड कहते हैं इसको, आई गेस, हाँ विंडशील्ड जो होती है, इसके ऊपर यूं नॉर्मली एक सिल्वर वो लगा दिया जाता है, एक कर्टन सा, सो दैट कि गाड़ी गर्मी में बहुत ज्यादा हीट अप ना हो. उसका रीजन क्या है कि दिस सरफेस वुड, व्हाट वुड द सरफेस डू, वो रिफ्लेक्ट करेगी सारी उसको. यहाँ पे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि शाइनी और व्हाइट सर्फेसेज आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर एंड द वर्स्ट एब्जॉर्बर, whereas जो मैट ब्लैक सर्फेसेज होती हैं, मैट जो डल ब्लैक, मैट ब्लैक मैंने आपको बोला था ना, अगर वहीं पे आप शाइनी ब्लैक सर्फेस रखोगे तो वो मीडियोकर उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, क्योंकि शाइनी हमारे पास पता है कि वो एक रिफ्लेक्टिव सर्फेस होती है. ठीक हो गया? तो उन्होंने ये सारी रीजनिंग दी हुई है कि इन वो जो इग्लोज होते हैं हमारे पास, उनका इनसाइड जो है वो वार्मर होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, बिकॉज वो हमारी हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इनसाइड. ये वो एक्सपेरिमेंट अगेन
कि 2 उन्होंने वो लिए बीकर्स लिए, 1 ऑफ ब्लैक एंड 1 ऑफ सिल्वर, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर उन्होंने ऐड किया एंड एट द सेम टेम्परेचर एंड दे लेट इट कूल। ठीक हो गया। एंड दे वुड ऑब्जर्व कि सबसे ज्यादा फास्ट टेम्परेचर किसका डिक्रीज होगा, ब्लैक सरफेस का। ठीक है, क्योंकि इट्स अ इट इट ब्लैक सरफेस एमिटर भी है एंड एब्जॉर्बर भी है। शाइनी जो है वो हमारे पास गुड रिफ्लेक्टर है, तो उसका टेम्परेचर जो है स्लोली डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग बर्नर के थ्रू दोनों का टेम्परेचर राइज ऑब्जर्व करेंगे तो ब्लैक का टेम्परेचर जल्दी फास्टर राइज होगा एज कम्पेयर टू द शाइनी सर्फेस। So these are the few experiments through which we can justify. This is the table which is very important when it comes to the properties of conduction, convection, radiation ना। What अगर हम houses के बारे में बात करें तो curtains जो हैं they stop convection currents and they also stop prevent energy thermal energy transfer। जो हमारे पास सीलिंग के अंदर जो इंसुलेशंस होती हैं they prevent conductions through floors and ceiling। ठीक है, हमारे पास डबल ग्लेज विंडोज होती हैं, डबल ग्लेज विंडोज के इन बिटवीन वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो अगर इफ देयर इज वैक्यूम तो वो कन्वेक्शन को भी रोकेगा एंड कंडक्शन को भी रोकेगा। ठीक है, और जो कैविटी बिटवीन वॉल्स होती हैं उनके इन बिटवीन एयर होती है एंड एयर इज अ पुअर इंसुलेटर, तो सॉरी गुड इंसुलेटर, तो हमें वो कन्वेक्शन से स्टॉप करेगा। ठीक है, और हमारे सॉरी कन्वेक्शन कह रहा हूँ, कंडक्शन को स्टॉप करेगा। वेरएस फॉर्म अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं इन बिटवीन द वॉल्स तो वो किसको स्टॉप करेगा, कंडक्शन को स्टॉप करेगा एंड कन्वेक्शन को स्टॉप करेगा। ठीक है, सो कैविटी स्टॉप्स कंडक्शन क्योंकि वहां पे एयर प्रेजेंट होती है एंड जो इस तरह के फॉर्म इन बिटवीन द वॉल्स होते हैं दे स्टॉप्स कन्वेक्शन। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप इन माइंड के कौन सा फिनोमेना किसको स्टॉप करेगा। एंड लेटर ऑन ये वैक्यूम फ्लास्क की एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा आता है कि ये जो स्टॉपर है ये स्टॉप करेगा इवेपोरेशन को एंड कन्वेक्शन को। जो वैक्यूम है, वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स इसको स्टॉप करेगा, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन दोनों को। सिल्वर सरफेस क्या करेगा, एज अ रिफ्लेक्टर काम करेगा, इट वुड कीप द ऑब्जेक्ट कूल एंड काम। सो यहाँ पे सारी चीजों के रिस्पेक्टिव यूजेस जो हैं वो डिस्कस हुए हैं एंड ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये उन्होंने कन्वेक्शन करंट का फिनोमेना दिखाया हुआ है कि जब चीजें हीट अप होती हैं, हम लोगों ने कन्वेक्शन करंट के अंदर हमने स्टडी किया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड इट्स डेंस दे बिकम लेस डेंस, तो जब वाटर हीट अप होगा इट बिकम लेस डेंस और वो अपवर्ड मूव करता है टेकिंग इट्स प्लेस कोल्ड वाटर। इस तरीके से हमारे पास कन्वेक्शन करंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग ना। तो नॉर्मली हम एग्जांपल्स इनको भी डिस्कस करते हैं कि जो रूम एसी जो एसी होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रूम एंड जो रूम हीटर्स होते हैं दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम। व्हाई इज दैट? Cause ACs are placed at the top, cause top एरिया के ऊपर कौन सी एयर प्रेजेंट होगी, हीटेड एयर प्रेजेंट होगी, लेस डेंस एयर प्रेजेंट होगी। तो एयर कंडीशनर उसको क्या करता है, कूल डाउन करता है। और जो हीटर्स हैं उनको नीचे इसलिए रखा जाता है बिकॉज बॉटम पे हमारे पास कौन सी एयर प्रेजेंट होगी, कोल्ड एयर प्रेजेंट होगी या वार्मर एयर प्रेजेंट होगी। कोल्ड। ठीक है, बिकॉज वो मोर डेंस होती है, इट वुड बी सेटल डाउन, तो इस वजह से हम लोग उनको अभी उसने ब्लैक कोट एंड सिल्वर कोट सिल्वर लेयर से यही कहा है कि सिल्वर जो है इट वुड कीप आवर बॉडी वार्म एंड ब्लैक इट्स अ गुड एब्जॉर्बर। तो इस तरीके से नॉर्मली सर्दियों के अंदर हम इस तरह के जो है वो कोट्स जो है वेयर अप करते हैं। ठीक है, सो कन्वेक्शन करंट क्या होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ कोल्ड एंड एयर पार्टिकल्स, सॉरी कोल्ड एंड हॉट एयर पार्टिकल्स और वाटर वट एवर वी जो है डिस्कशन हम लोग करें। थर्मल ग्लाइडर्स का समटाइम्स टर्म यूज होता है। थर्मल ग्लाइडर्स जो होते हैं बेसिकली वो बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं, मोस्टली बर्ड्स के बारे में ही बात होता है कि जो कि कन्वेक्शन करंट को अपनी यूज में लेके आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमने सारी कर ली थी। कन्वेक्शन का फिनोमेना ये प्रेशर परमैग्नेट क्रिस्टल्स, ये कन्वेक्शन करंट की ये एग्जांपल आती है अक्सर एग्जाम्स के अंदर कि इसके सामने जो हीटर, ये जो हीटर की एग्जांपल बताई है, अब ये ब्लू एरोज हमें किसको शो करें, कोल्डर एयर को, रेड किसको शो करें, वार्मर एयर को। तो ये मूवमेंट ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर पार्टिकल्स इज कन्वेक्शन करंट। वेयर एज ये रेफ्रिजरेटर्स के अंदर क्या काम होता है, उसने ठंडा करना होता है, चीजें कूल अप होती हैं, उस टॉप के ऊपर उसका जो है वो फिन लगा हुआ होता है जो कूलिंग एजेंट होता है हमारे पास। इसकी थ्योरी भी साथ साथ ही लिखी हुई है, यू कैन इजीली रीड देम।
इन रेफ्रिजरेटर कोल्ड एयर सिंक्स फ्रॉम द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट। अब कोल्ड एयर जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी इफ द फ्रीजर वाज एट द बॉटम। अब वो कहते हैं कि फ्रीजर को बॉटम पे क्यों नहीं रखते हैं? व्हाट कम्स टू योर माइंड, व्हाई वी डू नॉट पुट फ्रीजर एट द बॉटम? फ्रीजर नीचे जो होती है वहां से हीट नहीं निकलती, इस वजह से फ्रीजर को बॉटम पे नहीं हाँ, रखते हाँ जी। हमें चूंकि उसको कूल डाउन करना, नीचे हीट नहीं होती है, हीट टॉप पे होती है। सो अगर हमें किसी चीज को कूल डाउन करना है, सो वी नीड, वो ऊपर प्रेजेंट होगी, वो बॉटम पे प्रेजेंट नहीं होगी। जो हॉटर पार्टिकल्स या जो वार्मर पार्टिकल्स हैं, दे वुड ऑलवेज गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो इफ वी वांट टू कूल देम डाउन, तो हमें कोई भी ऐसा सिस्टम जो है उसको हमें अपवर्ड लगाना है, नॉट एट द बॉटम। ठीक है, ये उन्होंने लिखा भी हुआ है। Cold air would remain there and the food at the top would not be cooled. That is why we put the freezer at the top, not at the bottom. Do you get it? How convection current works in heaters and refrigerators? There is a lot of theory when it comes to this chapter, but the bullet points that I've given you, that are more than enough to understand any kind of question. Okay? हाँ जी। That is the end of this chapter now. And चैप्टर 9 पे ये जो है मोरम ब्राउनियन मोशन, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ तक एक्सप्लेन करते कहाँ पे बेटे? हैं। पेज नंबर 159, मिडिल पे पैराग्राफ है।